Hello everyone and welcome to V Throttle. So today we are here finally at Honda Big Wing South Delhi in Lajpat Nagar. We are going to take the test ride of the new Honda CB350. Now we have two different models here. One is the DLX, one is the DLX Pro. I'll show you the difference between both of them and we'll take you straight away to the ride. But before that, let's just check out what's in both of these motorcycles. So here is the motorcycle and this particular model is the DLX, that is the DLX Pro. थोड़ा बहुत difference है इसके अंदर. That motorcycle is Bluetooth ready and also the fender and the covers for the suspension comes in the same color of the motorcycle. In this you have the black fender and black covers plus this is not Bluetooth ready. दोनों मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिक तरीके से बनाई गई हैं और दोनों ही मोटरसाइकिल में एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो ये है कि जो लुक्स हैं वो मिनिमल रखे गए हैं. एट द सेम टाइम दिस लुक्स बिगर. We have all the other motorcycles here. Highness भी है हमारे पास में यहाँ पे, but this definitely looks bigger and have a classic sort of design to it and classic appeal to it. If you look at the side profile, this is the side profile and this one also comes with the traction control. So traction control का जो बटन है वो यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे आप रीसेट्स भी कर सकते हैं and you also get a USB Type C charger here. Now I've ridden the motorcycle without the traction control off, so that means traction control जो है वो on था मोटरसाइकिल पे while taking the test ride of the motorcycle, because traction control मैं तब ऑफ करता हूँ जब मुझे ऑफ रोड जाना होता है. So this also comes with the P shooter exhaust. This design is much more classical than what you get on the Highness and you also get the tank grip here. This is also very handy while going into the corners as well. जो classic look है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से maintain किया हुआ है इस engine design के साथ में. You also get Nissan brake calipers पीछे भी and front में भी. Both of the motorcycle get telescopic suspension, but दोनों पे covers लग गया है तो उस वजह से जो मोटरसाइकिल है वो बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है. The tank design has also changed, तो ये थोड़ा सा wide है. So if you notice, this is the DLX model. यहाँ पे आपको options नहीं मिलते हैं. On the DLX Pro you get the options here for your Bluetooth connectivity. Horn जो है वो आपको यहाँ मिलता है. Indicators नीचे की तरफ मिलते हैं जो कभी कभी confusing लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आपकी आदत पड़ गई तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको ऑपरेट करने में. Let's talk about the dashboard. This is a simple dashboard. So you have all the information here: trip A, trip B, odometer reading, battery voltage. Then you also get the range and that is the fuel indicator. And then you have the gear position indicator as well with the clock. You also get a very big dome, headlight dome here, and then you have the LEDs in the front. The indicators are also beautiful. Overall, the design cue of this motorcycle is really good. Let's take you to the test ride and देखते हैं कि ये किस तरह से perform करती है रोड के ऊपर. क्या ये आपके डेली के काम निपटा सकती है, उसके अलावा वीकेंड राइड्स एंड ऑल्सो क्या ये आप टूरिंग पे ले जा सकते हैं इस मोटरसाइकिल को. सो लेट्स जस्ट टेक यू टू द राइड वीडियो. So guys, here we have the new Honda CB350. बहुत ही huge, humongous and beautiful लग रही है. This is just so beautiful. इसमें fog lamps लगे हुए हैं, साथ में एक ये बड़ा वाइज़र लगा हुआ है and एक बैक जो रेस्ट है for the pillion वो भी अवेलेबल है इसके ऊपर. प्लस इसके अंदर फ्रंट में जो इंजन गार्ड है, दिस इज़ अवेलेबल एज एन एक्सेसरी पार्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल, सो यू कैन बाई इट सेपरेटली. This looks absolutely premium, a big huge motorcycle. This is a pure classic. This is the DLX Pro model. अब DLX Pro के अंदर क्या है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो included मिलती है. For example, this motorcycle is ready for the Bluetooth communication, so you can pick up the phone calls and everything. But हम उसके अंदर नहीं जाएंगे डिटेल्स में, ना ही मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स में जाऊँगा, ना ही इसके वेट के ऊपर जाऊँगा, बिकॉज क्लासिक्स जो हैं उसका जो वेट जितना भी हो, that is never a point of discussion. The point of discussion is that how well the weight is managed on this motorcycle. So let's just roll and see how this performs. Okay, एक चीज़ जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ना, वो ये लगती है क्लासिक बाइक्स. You get both heel shifter and toe shifter on the classics. I'm riding a classic after a long time. I love the way this sounds. The thump on the exhaust note is not equivalent to what you get on the Highness, but it is still good. It's so soothing. Power delivery is linear
and the acceleration is decent. So we're riding in the city, and this feels such an ease to ride. Plus the tank is wider, so you actually sit like a king. For example, that Sardarji over there is going on his Royal Enfield Bullet 350, yeah, but then he's sitting like a king, okay? And on this motorcycle, the natural riding stance is the king stance. This motorcycle is what a pure classic should be like. Simple, sober, all the things required. This one also get the traction control, so obviously that's a very good add-on अगर देखा जाए आपके लिए city के अंदर भी. Even if you're going on tours, for example, it's a very good add-on. My height is 5'10" and मेरे पाँव जो हैं वो almost पूरे नीचे लग रहे हैं because the seat is a bit wider. तो 5'8" से छोटे हाइट के लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज द राइडिंग स्टांस इज स्टिल बेटर. क्योंकि आप मोटरसाइकिल को जो पकड़ने का पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कमांडिंग पोजीशन है, तो उस वजह से आपको इतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा, फ़र्क भी नहीं लगेगा. अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो हैंडल बार है वो आपको हैवी नहीं लगता है. आई हैव रिडन मोटरसाइकिल्स जो हैवी नहीं होनी चाहिए वो हैवी लगती है, पर ये आपको फ्रंट से जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा ट्रैफिक के अंदर. सो इट्स एन ईज टू यूज़ द हैंडल बार, तो आपकी रिस्ट के ऊपर भी जोर नहीं आने वाला है. सिटी के लिए द सस्पेंशन इज एब्सोल्युटली फाइन अभी तक. सो यहाँ पे कुछ जिस तरह के जंप्स हैं या रोड जो है वो अनइवन है, कुछ हम्प्स बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द बैड कंस्ट्रक्शन, यू वोंट फील दैट. इतना ज़्यादा इसके अंदर आपको पता नहीं लगेगा बिकॉज सस्पेंशन के साथ में जो सीट है दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द ओवरऑल कंफर्ट. देयर इज अ गुड फीडबैक फ्रॉम द रियर सस्पेंशन. फ्रंट सस्पेंशन इज सोकिंग अप रियली गुड. दिस हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू राइड अ मोटरसाइकिल विद 19-inch rim. There is a possibility that the front end would be heavier than a 17-inch. But not in this motorcycle. The front end is super light and I can flick it easily. See, it is very much easy to flick this motorcycle in the traffic, and that to the Delhi traffic. Let's talk about vibrations. Yes, there are a little bit of vibrations at around 70 to 80 kilometers an hour, but below that it is still manageable. These are not the sort of vibrations which are going to spoil your mood forever. The transition between the gears is awesome. It's flawless. The moment you leave the clutch, the bike is ready to go. Let's just talk about the transmission and the clutch operation. The clutch is super smooth and I have not faced any problem shifting the gears. In the traffic it was just so easy to manage this clutch, and also the gear shifting is flawless. While shifting between the gears there's no jerk, and also you can feel that mechanical clunk when you're shifting the gears. The seat is in middle of between the soft and the hard form, because you can sit on this for a long time without soaring your bumps, and at the same time the suspension is actually taking care of a lot of potholes and bumps and everything. So let's see how this goes in the corner. Yeah, pretty well. So the suspension is actually performing all the duties pretty nicely. As I dip into the corner, the suspension is actually keeping me stable into the corner, and also because of the weight the tire grip is just fine. Let's see if it is easy to take a U-turn on this motorcycle. Oh, pretty easy. Let's see what happens just in case you encounter a bad road or a bad patch of road like this one. So you have to go somewhere, right?
This is where things get interesting. Oh yeah. Oh, it can take it all. Oh my god. I like it. No complaints from the motorcycle. And taking a U-turn on a bad patch as well. So भाई लोग, आप लोग इसको ले जा सकते हो. This is a Ladakh ready bike. Oh, I'm standing on it. What? This is pretty cool. Oh, wow. So it's a good companion for your everyday rides, your weekend rides, even your long rides. Let's see if the brakes work fine. We have a lot of space, and then here I hit the brakes on 80. That was a quick stop right there. So it's a classic done right with classic thump, with classic brakes. You know, it has that drum brake kind of braking, and it has that classic vibrations as well. A pinch of future with the old school vibe. The riding posture is cool. My legs are almost 90 degrees. Couple of negative points. Seat could have been a little bit better. Second, vibrations at the speed of 80 kilometers an hour. But there is a solution, and the solution is to get really good grips for these handlebars. Something like grip puppies. The throttle response is so good on this motorcycle. It's like instant and feels so connected. I hope कि Royal Enfield 350 के अगेंस्ट में इसके जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आप उनको रिलेट कर पाएंगे. So हमने कोशिश की है इसको उस तरह से चलाने की जैसे एक बंदा सुबह सुबह उठ के अपने ऑफिस के लिए जाना चाहेगा, या फिर एक वीकेंड राइड के लिए जाना चाहेगा, या फिर एक टूर पे जाना चाहेगा. एक छोटी सी चीज़ जो मैं मिस आउट कर गया हूँ वो ये है कि जब आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं तब इसके जो फुट पेग्स हैं वो आपके शिन पे लगते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में इसकी आदत पड़ जाती है. सो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस अगेंस्ट द क्लासिक और द रॉयल एनफील्ड 350, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टाटा.